A very good afternoon to all the viewers today. And we from School of Health Sciences, along with our service divisions, are here to sort out all your queries and problems about the various programs that we are offering for the January 2024 session. There are many of you who have joined today who have either already registered or taken admission in our programs, and there may be many of you who would also like to join our programs. So we will be telling in details about all the programs that we are having. So today in our panel with us, we have to my extreme left is Dr. V.P. Rupam, who is Additional Director from Student Registration Division. He is with us to help you understand the process of admissions in IGNOU and to sort out any queries or any problems that may be faced by the students who are trying to register for these programs. Next, we have Dr. D.P. Singh. He is the Deputy Director from Regional Services Division, and he will acquaint you a little bit about what is the role of the Regional Services Division and the role of the study centers that we have, especially for the School of Health Sciences programs. Next to me is Dr. Rita Devi. She is the Assistant Professor Senior Scale. She is from the nursing discipline, and she is here to acquaint us about the nursing programs. She is also the discipline coordinator of the school for the nursing programs. Welcome all of you for this particular session. So I'm sure you have a lot of questions, so we will stop our presentations whenever there's a question, but we would like to run through whatever information we would want to give you. So if I can have my slide, please. So from the School of Health Sciences, as you know that this is housed in IGNOU, and if you, many of you who do not know, this is the largest university in the world with more than 3 million students, more than 257 programs. It has been accredited A++ by NAC and has got a 5-star rating by Ministry of Education for the Innovations Cell for promoting innovations. So just to add a line here that we all from IGNOU are very much into innovation, startups, and we would very much like all our students who enroll to also, if they want, get an opportunity for creating startups and going on for entrepreneurship or starting enterprises. This is just broadly the structure of IGNOU. You can see the visitor who is the president of the country, and we have various boards. We have various schools of studies, and School of Health Sciences is one such school. We have support divisions, like we have 2 officials over here from Student Registration and Regional Services Division. We have other divisions like material distribution and all. We have certain centers and certain units which help support all the academic programs that are run by the university. Now, we have the School of Health Sciences has 2 disciplines, Health Sciences and Nursing Sciences. The Health Sciences disciplines are of preparing programs mainly catered to doctors, and the Nursing Sciences are also offering programs basically for nurses. But on the whole, the school is also offering programs for other categories. For example, 10+2, we are offering programs for school teachers, for parents, and also for anybody who may be interested either to make a career in health or to improve the health of their and their own community. Now, this school was established in 1991, and I have already told you that basically our main purpose is to launch programs to for continuing education of the health professionals, for health awareness, and also for conducting research. This is just a broad, bird's eye view of what programs we are having. So we have around 20 programs ranging from postdoctoral to graduation to PG diploma, certificate programs, and we will be discussing these programs one by one. So we have the health sciences programs, and our school programs are slightly different from the other schools. So we would just like to give you an overview of how the development and delivery of programs through blended mode is done for our programs. Now, many times people and students confuse distance learning mode with the correspondence mode. It's important to understand that what we offer is not just course material, but a package of the program in which we have got course material, we have online classes, we have face-to-face classes, we have term and examination, we have certain videos which are also part of the program, and we do the evaluation through continuous evaluation in the form of assignments and the online examination.
I will also request the studio people to scroll the toll-free numbers and the numbers on which calls can come, so that you can ask questions while you are seeing our program. This is the infrastructure that is available for delivery of our programs. If you can see, one side is the programs for the medical doctors. We have the regional center, which our friend Dr. D.P. Singh will be talking about. They are the administrative centers of IGNOU, and under them we have got the learner support centers for medical programs. These are housed in medical colleges or hospitals, and for nursing they are housed in the colleges of nursing, and they are supposed to do their practicals in these centers and also submit assignments. Plus we have got sometimes some centers nearer to your home for practicing the skills. These could be workplace or these could be skill development centers. All the programs where we are offering certificate, diploma, degrees are basically having a theory and a practical component, and there is a continuous assessment both for theory as well as for practical component. There is a very rigorous feedback system to have monitoring of the program, as well as for understanding where and when revision needs to take place, and so that we can customize the program as per the needs of our students and the aspirants. So now I will hand over the mic to Dr. Rupam, who will give a small overview about how admission process happens in IGNOU, and especially for the programs of School of Health Sciences. Dr. Rupam, please. Thank you, madam. Welcome to all the viewers to this program. We regularly organize these programs so that before you actually take admission, if you have any questions or queries, we can address them so that you can decide, make an informed choice about the program that you want to join. School of Health Sciences offers a wide range of programs meant for medical doctors, for nursing professionals, or those who want to join the nursing profession, as well as a very large number of programs which could suit the need of anybody who is interested, right? Now, I'll be talking very briefly about the admission process of Indira Gandhi National Open University. Let me begin by saying that the process is very, very simple. And it's completely online, so you don't have to go anywhere. You can take admission sitting in the comfort of your home or in your office. You can, just take out 10-15 minutes and complete the application process. There are two types of programs that the School of Health Sciences is currently offering. Some have limited number of seats at each of the program study centers. About the program study center, my colleague Dr. D.P. Singh will talk in greater detail. Basically, program study center is the contact point. That is where you attend the face-to-face session, or you submit your assignments, or you attend the practical sessions. So in the programs where we have limited number of seats, for example, postgraduate diploma in maternal child health, or postgraduate diploma in geriatric medicine, or similar other programs, we have deployed a separate portal, because there we have to prepare a merit list. There's a call. There's a call from Palwan. There's a call. Yeah, we'll take the call. Yes, please come in. We can't hear you, please. We are not able to hear the call. Hello? Yes, please. आपकी आवाज आ रही है? अभी बोलिए, हम अब नहीं सुनाई दे रहे हैं, बीच में आई थी आवाज. I think we can continue if the call comes. I'll continue. We will break when the call comes. Yeah. आप पूछ सकते हैं. हाँ जी. So can we take a look at the slide? हाँ जी. You can move to the next slide in the meantime. Okay. So this is the main website of the university. The address is simple, ignou.ac.in. There you will find the links on the main page of the website. You can click the link and it will take you to the admission portal. Fresh admission for January 2024 is going on. Right now the last date is 15th of February and today is 2nd of February, so we still have 13 days to go. You can see the different links.
the next slide if we can have. Yeah. So now I have categorized the programs into two segments. As you can see, the PG Diploma in Hospital Health Management, Geriatric Medicine, Maternal and Child Health, HIV Medicine, Nursing Administration, and PG CMDM. There is a separate portal, as I said. It's ignoflip.samarth.edu.in. You click this link and you have to register yourself. The process of registration is very simple. It doesn't take more than 2 minutes to complete the registration process. You have to provide your mobile number, email, your name, etc., and then you are registered. Once you have completed the registration process, you can log in and start submitting the application. You have to keep some documents, your photograph, your signature, etc., ready in scanned form. The guidelines are given on the portal. For the limited number of seats program, that is merit-based programs, we have ignoflip.samarth.edu.in. Flip essentially means Fixed Learner Intake Program. Now, in this category, you don't have to pay the program fee at the time of admission because a merit list will be drawn up, and if your name figures in the merit list, an offer of admission will be sent to you through email. You have to log into your account on the same admission portal, pay the program fee, and your admission shall be confirmed. Once your admission is confirmed, you will receive further confirmation email from us. We will email the student I-card to you, and then you become a confirmed student of the university, and you can avail all the facilities that are available to the students. For the next category of programs, that is general programs where there is no seat limitation, it is our common admission portal, that is ignoadmission.samarth.edu.in. Again, a 1-minute process of registration. Now, in this category of programs, since there is no limitation in the number of seats, you pay the program fee along with the application, and we process the application, and if we find that you fulfill the eligibility criteria, we confirm your admission, and the moment we confirm your admission, a confirmation email goes to you, a confirmation SMS goes to you, and a lot of other details are mailed to you, and you can proceed further. So these are the two types of admission processes. Well, if you follow these processes, it will not take you more than 10-15 minutes. Again, I think the call from Palwal is trying to come. Okay. Right? हाँ जी सर, हाँ जी मैम, मेरा नाम दीपक, मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ दीपक बोलो। मैम मेरी ये क्वेरी है कि जैसे मैंने 12th क्लास में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा था। हाँ। तो मैं अब बैचलर ऑफ आर्ट्स में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वह सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो उस सब्जेक्ट को जैसे मैंने देखा, वहाँ पे सब्जेक्ट थे बहुत सारे, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट वाला ऑप्शन ही नहीं था, तो इस वजह से मुझे पॉलिटिकल साइंस लेनी पड़ी। तो हमारे यहाँ इग्नू में फिजिकल एजुकेशन का कोई कोर्स एक्चुअली रन नहीं करता है, इसीलिए आपको जो है वो नहीं दिख रहा होगा। अच्छा अच्छा। देखिए, आप हमारे एडमिशन पोर्टल पर जब जाएंगे तो वहां पे मेन एडमिशन पोर्टल पे, क्योंकि जो फ्लिप पोर्टल है उसमें तो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ही ऑफर किए जाते हैं, हमारे मेन एडमिशन पोर्टल पर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन का एक टैब है। वहां पे जितने प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आपको जिस प्रोग्राम में रुचि है उसके बारे में थोड़ा सा आप टाइप करेंगे। जैसे अगर आपको हेल्थ एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो आप हेल्थ एजुकेशन टाइप करेंगे तो उस एरिया में जितने प्रोग्राम्स हैं उसकी सारी डिटेल्स, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी फीस, वो प्रोग्राम कहाँ अवेलेबल है। बैचलर ऑफ आर्ट्स 3 साल वाली करनी थी, उसमें मुझे जैसे 3 सब्जेक्ट चूज करने थे, तो उसमें मुझे एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन लेना था, लेकिन वो था नहीं, तो इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया बस। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी इच्छा होगी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लेने की, लेकिन फिर उन्हें ऑप्शन ही नहीं मिलता, तो वो और सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है उनको। आप एक डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन ले सकते हैं अगर आपने 12th करी है, तो उसके बाद आप डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं। अभी एडमिशन ऑन है, आप एक बार देख लीजिए, वो प्रोग्राम करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन मतलब मेरा, जैसे मैंने अब फॉर्म फिल कर दिया है, तो
तो उसके लिए जो मुझे जो मैंने एक तो स्टडी सेंटर होता है और एक दो सेंटर चूज करने पड़ते हैं, जिसमें एक तो स्टडी सेंटर होता है और एक और कौन सा होता है मैम? रीजनल सेंटर। हाँ जी, एक रीजनल सेंटर, एक स्टडी सेंटर। तो स्टडी सेंटर होता है, वहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा सर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। ऑनलाइन फॉर्म आपका फिलअप हुआ है, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही वेरीफाई होगा। जी, मैं डॉक्टर सिंह इस बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, ये सारी चीजें हमने अपने एडमिशन पोर्टल पर लिखी हुई हैं। आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है 10th और 12th का, आप उसको स्कैन करके अपलोड कर दें, तो उसके बाद फिर कोई फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के स्कैन को देखकर हम आपका एडमिशन कंफर्म कर देते हैं। अच्छा सर। तो सर एक और क्वेश्चन, जैसे मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, तो मैंने अपने जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लगाई है, तो सर जो इग्नू की तरफ से जो पढ़ने के लिए किताब मिलती है, क्या सर मुझे वो किताब नहीं मिलेंगी या फिर मुझे कहीं अलग से खरीदनी पड़ेंगी? नहीं, किताब ऑटोमेटिकली मिल जाएगी कि नहीं? आप अगर स्टूडेंट बनते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपको किताब ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं बनना चाहते तो आप किताब इग्नू की परचेज भी कर सकते हैं। हाँ जी, एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें कि आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो डिजिटल स्टडी मटेरियल का जो रिपोजिटरी है, ई ज्ञान कोश, आप हमारे इग्नू के वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको ई ज्ञान कोश का एक लिंक मिलेगा। वो जो रिसोर्स है वो सबके लिए बिल्कुल फ्री है। आप स्टूडेंट हो या ना हो, आप वहां से इग्नू का स्टडी मटेरियल जो डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। वो किसी भी प्रोग्राम का हो, वो बिल्कुल फ्री है सबके लिए। हाँ जी सर, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन जैसे मेरे पड़ोस में से एक व्यक्ति ने और ने एडमिशन लिया था बैचलर ऑफ आर्ट्स में जून 2023 में, तो जुलाई 2023 में। तो उसमें क्या है मैम, उसने पूरा एड्रेस भरा था, बुक जो है पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं आप, तो उसके लिए पूरा एड्रेस भरा था कि आप डिजिटल फॉर्म में अपना क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने घर पे ही मंगवाना चाहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन मेरे लिए तो कोई आया नहीं था कि आप स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं या फिर अपने घर पर ही मंगवाना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं आया था। इसलिए मेरे मन में ये क्वेरी थी कि शायद मेरी फीस माफ हो गई है उस शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से, जिसमें इनकम लगाना पड़ता है, मुझे नहीं मिल रहा होगा, इसलिए तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है। कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए कि आपका कौन सा स्पेसिफिक प्रोग्राम है, आप उसके लिए ईमेल कर दीजिएगा। हम अभी आपको ईमेल देंगे ताकि उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है? ठीक है। सो सर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? नहीं, एडमिशन के बारे में एक दो चीजें और हैं। अगर आपको एडमिशन फॉर्म भरने में थोड़ा सा और गाइडेंस चाहिए तो मैडम, कैन यू ओपन दैट मेन एडमिशन पोर्टल? जी, थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे, नहीं पहले वाले में। जी हाँ, और थोड़ा नीचे। हाँ, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं, हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप उसको वॉच कर सकते हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में ही ये वीडियो अवेलेबल है। तो आप इसको 5 मिनट का समय दीजिए, आप इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस स्टेज पर क्या डेटा भरना है, कैसे भरना है। एक दो चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है एडमिशन में कि जो भी डेटा आप भरते हैं, जैसे आपका एड्रेस है, तो एड्रेस आपका करेक्ट होना चाहिए। नाम जो है आपका, वो जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है एग्जैक्टली वही होना चाहिए। यदि कोई उसमें चेंज है तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। आपका जो सर्टिफिकेट स्कैन करके आप अपलोड करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको एप्लीकेशन भरने के बाद एक प्रीव्यू पेज मिलता है। उस प्रीव्यू पेज पे आप सारी जानकारी वेरीफाई कर सकते हैं अपना फॉर्म फाइनली जमा करने से पहले। एक बार जब आप पेमेंट कर देते हैं तो फिर उस फॉर्म को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जमा करने से पहले प्रीव्यू पेज पर सारी जानकारी वेरीफाई कर लीजिए कि सब कुछ सही सही भरा गया है। और विशेषकर ऐसी स्थिति में यदि आप किसी साइबर कैफे के थ्रू अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपको डबली केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि यदि कोई और आपके लिए फॉर्म भर रहा है
तो उसमें गलती की संभावना ज्यादा होती है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप कोशिश ये करें कि जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू करें, ताकि यदि किसी परिस्थिति में आप मान लीजिए लेटर स्टेज आप मान लीजिए कि एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं, या मान लीजिए एलिजिबल नहीं होने के कारण आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो आपको रिफंड में परेशानी नहीं होगी। तो आप अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अपना मोबाइल नंबर दें, किसी और का मोबाइल नंबर ना दें। There is a call from Delhi. There is a call. Yes, Delhi, please come in. Hello. Yeah. Hello, am I audible? Yeah, you are audible. Okay, yeah. Good evening, sir and ma'am. My question, I'm from New Delhi. Myself, Dr. Suparna Joshi, and I wanted to ask that the courses which are available at IGNOU, like I have applied for PG DGM, Geriatric Medicine, Postgraduate Diploma. So are these courses NMC recognized? Okay. So these courses are not recognized by MCI or NMC for added qualification. You cannot add them as part of a recognized qualification after your name, because for a diploma it should be a full-time program and it should be also for 2 years. We are having only a one-time program. All our medical programs that we are offering for doctors are basically continuing medical education programs, and they are basically for improving your knowledge and also for increasing your skills wherever you are working, or if you want to go in, for a change of your subject. You are doing general medicine, but you would want to specialize and look after patients who are in the elderly category. So it will help you, because all doctors are anyway seeing elderly patients. But if you want to go in for an old age home, or you want to have an old age clinic or a ward, something like that, so that will be useful for you. But otherwise it is not as an recognized qualification that you can say you are a postgraduate which is recognized by MCI in the particular subject. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. You're taking this further. As a matter of fact, a program recognized by MCI or any other regulatory body definitely adds to your qualification. But equally important is to upgrade our knowledge, to upgrade our skills, so that whatever we are doing, we are able to do it better, we are able to do it more efficiently. So I think continuous professional development is very, very important. So irrespective of whether a particular diploma is recognized or not, I think its academic value remains, and therefore its professional relevance remains. So and this is proved because we receive a very large number of applications for all these programs. We are not able to accommodate all of them because of the limited number of seats that we have. Because we also make sure that the students we enroll, we are able to provide the best possible services, best possible professional training. So all these program study centers are established in reputed medical institutions so that you get the best of facilities. So, of course, recognition is one important part, but the other part I talked about is no less important. In fact, perhaps more important to me. Thank you for the adding on, Dr. Rupam. Anything else you would like to say about admission? That's all, unless there are questions, because as I said, the admission process is very simple. Just 10 minutes of time is what you need to submit an application of IGNOU. If you are ready, we have given that checklist. Your photograph scanned 100 kilobytes, your signature scanned 100 kilobytes, your certificate scanned 200 kilobytes. So if you keep these things ready in a folder, and that's not difficult, you can use your mobile to scan your certificate and save it. So 10 minutes is all it takes. Thank you, Dr. Rupam. And any questions you have, because he is an epitome of knowledge, and he's actually, looking after the admission process. So if you have, you can always ask. Because many of you may be in the process of filling or have already filled.
And I think one more thing I would just like to add on to the admission process is that many of you for these programs which Dr. Rupam was telling that they are merit-based programs, you have already registered. But many of you have been asking questions in the email that when will we pay? We have not been asked to pay the admission fee. So the point is, because these are merit-based programs, the merit is drawn only after everybody applies. And so since the last date of admission is, yes, Karnal, we'll take you first. Call from Karnal. हेलो. Yes. नमस्कार मैम. नमस्कार सर. हेलो. हाँ बोलिए, हम सुन सकते हैं. हाँ मैम, मैंने एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था बैचलर्स में, ये बैचलर्स ऑफ कॉमर्स के लिए अप्लाई किया था. बैचलर्स ऑफ कॉमर्स. मैंने जो अप्लाई करना था वो BCOMG के लिए अप्लाई करना था, बट जो मेरे पास फॉर्म भर के आया है वापिस, उसमें जो प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है वो BCOMF लिखा हुआ है. BCOMS instead of BCom. हाँ बिल्कुल सही आपने देखा. पहले जो हम ऑफर कर रहे थे उसका प्रोग्राम कोड था बीकॉम जी. देखिए ये प्रोग्राम बैचलर ऑफ कॉमर्स ही है, कोड बदला है क्योंकि सिलेबस बदला है. जनवरी 2024 से यूनिवर्सिटी ने जो बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसको अडॉप्ट किया है. इसीलिए आपको बीकॉम एफ दिखेगा, वो बैचलर ऑफ कॉमर्स ही है. आप उसके लिए बिल्कुल अप्लाई करें विदाउट एनी हेजिटेशन. वैसे ही जो हमारा पहले BAG था वो अभी BAM हो गया है. बैचलर ऑफ आर्ट्स जो था BAG से BAM हो गया है. BSc जो है वो BSc-G से BSc-M हो गया है. कोर्स चेंज हुए हैं, सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, प्रोग्राम वही है. ठीक है. थैंक यू. आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर. हाँ. अच्छा, नाउ सो कैरिंग फॉरवर्ड व्हाट आई थिंक ही वांट्स टू आस्क समथिंग मोर. आप कुछ और पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ बीकॉम को क्या मैं दोनों मोड में ले सकते हैं क्या? मतलब ऑनलाइन में भी इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नॉट क्लियर टू मी. ODL मोड होता है, ऑनलाइन मोड होता है बीकॉम. जी. बीकॉम तो सिर्फ ODL. नहीं, बीकॉम ऑनलाइन मोड में भी है. वो अभी अगले कुछ दिनों में हमारे पोर्टल पे एक्टिव हो जाएगा. अभी सिर्फ ODL का जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ये प्रोग्राम अभी ऑफर पे है. वो इसका ऑनलाइन वर्जन भी ऑफर पे है जनवरी में. उसको हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ दिनों में वो भी पोर्टल पर आ जाएगा. ओके सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. So what I was saying is कि जो हमारे merit based programs हैं, because you have only paid the registration fee, you have not paid the admission fee, but because they are merit based, so there will be a merit drawn after the admission last date is over. तो last date हमारी 31st January थी, but it has been extended to 15th February and it may extend further. So do not worry that you have not got any intimation. We will be sending you an email in between that still you have to wait for another 15 days because this date may again be extended. It is possible, and so your merit list will be drawn only after that, and thereafter after the merit list is drawn you will be intimated to pay the admission fee. So please जैसे Dr. Rupam ने बोला, you have to be very careful in the email that you are giving, because that email should be you should check that email every day. Many times it happens कि हमारे यहाँ से information जाता है कि आपको admission fee pay करना है, लेकिन क्योंकि वो आपकी normal email नहीं होती है, you have made a special email for this, so you don't see it every day, और फिर आपका मिस हो जाता है. कई students का ऐसे हुआ है कि हम लोग उनको 15 दिन का टाइम, 10 दिन का, हफ्ते का टाइम देते हैं that you have to pay your admission fee, but they do not pay, the time lapses and their admission gets cancelled. So please be very careful and do not worry for especially the merit based programs. और जो merit वाले नहीं हैं, those people who have taken admission, I think their material distribution will start very soon and they will be given the course material. You can check the course material whether it has been dispatched or not on the IGNOU website. If you go, सबसे नीचे आप जाएंगे तो there is an MPDD, your dispatch status. Just click that and you will come to know. Call from Andhra. हाँ जी, there is a call. Hello. Yeah. Hello, good. Namaste, everyone. Namaste. I am Vacha Jayashree from Andhra Pradesh. So I had I'm having a doubt regarding the registration process, sir. So we have this option of doing 2 programs at a time simultaneously, right?
So what I did was I started to apply for CPY program, that is certificate program in yoga, Okay. and then I continued to apply for another program, and started to give my details as well. But when I wanted to choose the option, the course that I was looking for, that is DNHE, it was not there in the drop-down list. So I stopped there and started to use another fresh email, username and password the other day, and I received a confirmation letter for that. Confirmation mail for that. But I still haven't received any confirmation mail for CPY program. Okay, CPY, she applied for CPY. Okay. She registered and applied. Then she wanted to apply for another program. So she made a different ID and she applied through that. She got a confirmation for DNHE, but she has not got confirmation for CPY. All right. See, this is an ongoing process. What happens is we receive about 5,000 to 7,000 applications every day. So it's only a matter of time. In a few days, you should be getting the confirmation for CPY also, because we process the applications of certificate programs on priority, because you are taking admission in the January 2024 session, which means that you will be appearing in the examination in June 2024. So please wait just for a few days, you will get the confirmation. And you still have the email IDs of the program cpy@ignou.ac.in. So after a week, if you do not still get, then you are always most welcome to send an email on that email That's ID. right. Okay, thank you so much, ma'am. Yeah. So I think we'll now we're running short of time. Quickly, we can probably take Dr. DP Singh. He will try to explain about, what is the function of a regional center. रीजनल सेंटर का रोल स्टूडेंट्स के लिए बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन क्रूशियल रोल है. जैसा कि मैम ने अपनी स्लाइड में दिखाया था, 3 टियर हमारा सिस्टम है. उसमें हेडक्वार्टर है, उसके बाद फिर जो है रीजनल सेंटर है, फिर नीचे अगर आप आइए तो LSC होता है, जहाँ पे स्टूडेंट का कांटेक्ट पॉइंट होता है, कह सकते हैं फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट. और वहीं पे उनको जो है उनकी काउंसलिंग, प्रैक्टिकल कंपोनेंट की और बाकी सब असाइनमेंट और अदर एक्टिविटी वहीं पे कंडक्ट कराई जाती है. तो चूंकि जो हमारे ये SOHS के प्रोग्राम्स हैं मेडिकल से रिलेटेड, इसमें जो है प्रैक्टिकल कंपोनेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जिसमें कि किसी प्रोग्राम में 75% एंड एबव कंपलसरी अटेंडेंस होती है, तो जिसके लिए आप लोगों को जो है स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट करना होता है. और रीजनल सेंटर की जहाँ तक बात है, तो रीजनल सेंटर में अगर आपका जो है कोई एड्रेस चेंज है या किसी टाइप की आपको स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस स्टडी सेंटर से नहीं मिल पा रही है, उस केस में आप जो है रीजनल सेंटर को अप्रोच करते हैं. रीजनल सेंटर को अप्रोच करने के लिए रीजनल सेंटर का ईमेल आईडी आप जा सकते हैं, या जो है उनका वेबसाइट अलग से भी होता है रीजनल सेंटर का, उसके थ्रू भी आप सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप बात करें सिंगल विंडो इंफॉर्मेशन की, कोई आपकी क्वेरी है जिसका निदान करना है, आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप जो है आईग्राम है हमारा इग्नू का ग्रीवांस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके माध्यम से आप जो है अपने ग्रीवांस को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, और विद इन ए वीक आपको जो है उसका रिप्लाई मिल जाता है. ये हमारा सिस्टम है. इसके अलावा आपको फर्दर जो है कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपको इन केस आपका स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, जैसा कि मैम ने बताया, आप वेबसाइट पे जाके वहाँ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन है, उनके उससे लिंक से भी आप देख सकते हैं. नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन अगर अपना चेक करेंगे, जब स्टूडेंट जोन में जाएंगे रजिस्ट्रेशन स्टेटस वहाँ ओपन करेंगे, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आता है स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस. वहाँ पे अगर आप जो है क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी कि आपका स्टडी मटेरियल कब भेजा गया है, और स्पीड पोस्ट नंबर, बाकी डिटेल्स दिया रहता है, जिसको कि आप इंडियन पोस्ट के वेबसाइट पे जाके ट्रैक कर सकते हैं. तो ये मैम जो है हमारे रीजनल सेंटर का और स्टडी सेंटर का रोल है. ये दिखा सकते हैं हम, अगर एक बार स्क्रीन पे हमने किया है स्टडी मटेरियल स्टेटस. स्टडी मटेरियल स्टेटस मैंने यहाँ डाला है लिंक.
आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो यू कैन चेक वेयर इज योर स्टडी मटेरियल और कहाँ पहुंचा है अभी तक. ठीक है. और इसके अलावा एक चीज और ऐड. यस, देयर इज अ कॉल फ्रॉम श्रीनगर. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. मैम मैं स्टूडेंट हूँ इग्नो की, फ्रॉम कश्मीर, श्रीनगर कश्मीर. ओके. मैम मैंने एडमिशन लिया है अंडर प्रोग्राम बीएससी बायोकेमिस्ट्री. ओके. मैम मैंने ऑप्शन रखा था, जब वहाँ पे आता है ऑप्शन स्टडी मटेरियल के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन. मैम मैंने ऑफलाइन रखा था, मैंने उसके लिए पे भी किया था, बट मैम मुझे अभी तक कोई स्टडी मटेरियल पूरा नहीं पहुँचा है. मैम मुझे खाली इलेक्टिव मेरे जो सब्जेक्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट 2 उनकी मुझे ये पहुँची है स्टडी मटेरियल. बाकी कोर कोर्सेज का मैम मुझे कुछ नहीं पहुँचा है. अच्छा, कोई बात नहीं. आप अभी मैम हम जिक्र कर रहे थे कि आप अपना स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस भी देख सकती हैं, लेकिन अगर आपको जो स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो आप iGNOU पे अपना ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं. एक्चुअली मैं कंटिन्यूसली मेल कर रही हूँ वहाँ पे भी, फिर भी सर मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा. मैं बेटा यहाँ पर हम, क्योंकि इस सिचुएशन में हम आपकी यहाँ से मदद कुछ नहीं कर सकते. आप ईमेल करिए, नहीं तो अपने जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं उनको लिखिए, देन दे विल कांटेक्ट द एमपीडीडी एंड ट्राई टू फाइंड आउट. ठीक है. ओके. क्योंकि आज हाँ जी बोलो मैम. ये हमारी बस मैम. थैंक यू. ओके, थैंक यू. थैंक यू. Thank you very much. So thank you, Dr. D.P. Singh, for telling about the learner support and also the material distribution. And I will now invite Dr. Rita. Before that, I would like to thank Dr. Rupam because he has to go for another meeting. And if there is any more queries, we will send your emails to him for any admission process. And I would like to invite our Dr. Biplab Jamatia, who is also our faculty. So just a second. Thank you very much, ma'am. Thank you. Do join IGNOU. So I think now I also invite Dr. Biplab Jamatia to join. He's faculty of School of Health Sciences, and he's looking after a number of medical programs and also skill and awareness programs. So welcome, Dr. Biplab, and he will also be there to answer your questions. Before that, now I will request Dr. Rita Devi to tell us about the nursing programs that we are offering from IGNOU. Welcome all the prospective learners who are attending this teleconferencing session, and we are discussing about the programs of School of Health Sciences. And for the nursing discipline, we are running post-basic BSc nursing, which is recognized by Indian Nursing Council, PhD nursing, and we are also running 2 diploma programs, Diploma in Nursing Administration and Diploma in Critical Care Nursing. And apart from these programs, we are running certificate programs, that is certificate in home-based healthcare, certificate in maternal and child health nursing, certificate in newborn and infant nursing, certificate in adolescent health and counseling, certificate in first aid, and these are the programs of under nursing discipline. And if we see the target group for post-basic BSc nursing, it is. I think we can request them to show the screen so that the students are also able to see who is the target group. And yes. Thank you. For PhD in nursing, MSc nursing is the minimum eligibility, and this program is running successfully since 2009. And post-basic BSc nursing, this is for in-service GNM nurses. If you see those who have done GNM with 10+2, they need 2 years of minimum experience to be eligible to apply. And those who have done 10th with GNM, they need 5 years of experience to apply for the entrance examination, and the selection is done based on the merit list. And this program is the oldest program of the school. We are running since 1994, and this is the 30th year we are running this program. Then the Diploma in Nursing Administration, this program was revised in 2006, and GNM and BSc nurses and those who want to upgrade their skills in the nursing administration can join this program. Diploma in Critical Care Nursing is also for in-service GNM nurses, BSc nurses,
and even MSc nurses, they are, want to upgrade their skills in the super specialty area of critical care, they can join this program. And there is a lot of demand of this program throughout the country as well as internationally, as the non-communicable diseases are on the rise, and there are many critical care patients which are available, and they need to be looked after with specialized care. So diploma in critical care nursing is for that. And apart from that, certificate program in maternal and child health nursing, was revised in 2017, and that means upgraded knowledge. People can upgrade themselves in this area, and GNM can also join this program. Apart from that, even ANM and female health workers, public health nurses and health supervisors, they can join maternal and child health care program. As well as the certificate in newborn and infant nursing is another specialized area for GNM nurses, BSc nurses. They can upgrade their skills and knowledge. Certificate in home-based healthcare is the program for 10th pass group, and this program is being run successfully since 2009, and this program basically meant for the to look after the elderly and the bedridden patients at home setup, because nowadays elderly population is also on the rise and they need to be looked after mostly at home based care. So this manpower is required to serve this population. Then certificate in adolescent health and counseling. This program is to look after the adolescent health group, as the teachers are the most connected with the adolescent age. So teachers should upgrade their knowledge about this adolescent group, as well as any graduate can join this program for 6 months duration. Certificate in community health. This is the program which is being launched in 2017 in collaboration and funded from Ministry of Health and Family Welfare, and only the sponsored candidate of from various states of National Health Mission, they can join this program. In IGNOU, we get lot of queries about this, that they want to join, but then direct admission is not available, only through their own state National Health Mission. If the state select them, then that list come to IGNOU and then they can join. This program is for in-service RN, RM, registered nurse and registered midwife, and BAMS Ayurveda graduates can join the program. And there is one more program, that is certificate in first aid. This program is also for the 10th pass group. So because first aid is very important component where everybody need to be knowing these skills, because lot of road traffic accidents are on the rise and the victims are available every now and then. So everybody should know that at first hand what information or what care they can do so that patient is not harmed and can be transferred safely to the higher health facility. So this program is available. Now, post-basic BSc nursing program, as this program provide opportunity to a large segment of in-service nurses to upgrade their knowledge and skills, and it is an approved program from Ministry of Indian Nursing Council. And apart from that, if we see the other slide in which there are diploma in critical care nursing, certificate in maternal and child health nursing, certificate in newborn and infant nursing, as well as DNA. All these 4 programs are continuing nursing education programs in which even Indian Nursing Council provide 55 CNE credits, that is equivalent to 11 credits for the renewal of the registration as RN/RM. So this is important for all the students to join this program if you want to renew your registration at your state nursing council. So you will get the credits to renew your registration. So I think this is all about nursing programs.
Thank you very much, Dr. Rita. Now, as we said that we have got specific programs for medical doctors, so we'll quickly run through these programs. We have one program, as the student was also saying, postgraduate diploma in geriatric medicine. Now, as you can see that the number of geriatricians that are produced in our country is very, very less as compared to the number of people that we are training as far as geriatric medicine is concerned. This program is a one-year program of 36 credits. We have 3 theory courses and 3 practical courses, and you will be getting the study material, both hard and soft copies if you desire, but you will have to come to the medical colleges or the hospitals which are designated as learner support centers for 2 spells, that is at a stretch for 8 days and for another stretch at 7 days. In addition, you will also be posted in a skill development center. A skill development center is a district level hospital very near to your house, which even you can identify, and if approved and meeting the norms, you can go there for your competency building of the cases and the skills that we have given to you. There are online case discussions and recorded video lectures that are provided to you. Online assessments are also part of this program. Then we have a very similar, I'll take the first program as PG DMCH. This is a very similar program, again only for medical graduates, and this also has 3 theory courses, 3 practical courses. You are basically getting trained in 3 areas: community medicine, obs, gynae and pediatrics. Again, you have online classes. You have again 2 spells in a medical college of 6 days each, and again you have an SDC or a district level hospital kind of a posting, and you are required to do completion of a project. Now we come to another program that is exclusively for doctors, and that is PG Certificate in Medical Management of CBRNE Disasters, which has been developed in collaboration with INMAS DRDO. This is a 6 months program. It's a 6 months program, and it has an active support from so many organizations like DGFMS, CAPF, IDS, and recently also ESI has given their approval for sponsoring the programs for every one doctor in each hospital of the ESI hospitals. This has got just a 4 days contact session. The rest is all given the material in the form of hard copies and soft copies. Now I will request my colleague Dr. Viplab to explain about the next program, please. Thank you. We also have many other programs for doctors. One of them is PG Diploma in HIV Medicine. Basically, this program we developed in collaboration with NACO, Government of India, and this is a 1-year program where students need to go to the medical college for the practical training. In this program, we have 2 practical courses and 4 theory courses. So this program, beside this, all non-sponsored candidates also need to do 1 month training in the designated ART center for their proper practical training. And we also have another program that is postgraduate diploma in hospital and health management. That is basically for doctors, nurses, allied health, as well as for other graduates who have experience, 5 years minimum experience in 100-bed hospital. They can join this program. And in this program also, they have theory course as well as practical course. Students needs to go 2 times in a medical college for the like 5 days each for their practical training, because without having a hands-on practical training, only theoretical knowledge about the management will be useless. So it is mandated for the practical training in this program. Beside these 2 programs, we also have a certificate program. There's a call from Gaya. Yes. Yeah. Gaya, please. This call is now being recorded. Please come in, Gaya. Hello. Yes. हाँ मैम पूछना था PGD SHM कोर्स है ना IGNOU में, हाँ उसका कोई BHMS स्टूडेंट, हाँ उसमें BSc नर्सिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? BSc nursing student as well as pharmacy, allied health, they can apply with a minimum 2 years experience in 100-bedded hospital. After their graduation. Yeah, after graduations. Any doctors like MBBS, IOS, Ayurveda, and like dental, they can directly register without having any
experience after graduations, but the nursing graduates like physiotherapist, your pharmacy or lab technologies, they can also join with 2 years of experience after graduation. And any other graduate, maybe he is BA in English, but he is having 5 years experience in hospital, that is minimum 100-bed hospital, then they can also apply in this program. This is also a merit-based program. Yeah, this is also merit-based program. In every center, we have a number of students selected are limited. Unfortunately, we receive lots of applications for the particular center, and many candidates didn't get the opportunity to admit in this program. But over here, I would like to add to my colleagues' information that we are also planning to develop and launch an MBA in healthcare and hospital management from July 24. And in this, we will not have any seat restriction. We will have a similar kind of an eligibility in which all categories and any graduate can be admitted. And there will be no seat restriction, so there will be no merit formation. So if you meet the eligibility, you will be able to join this program. This will be a 2 years program. Yes, Dr. Biplab? Yeah. Besides this, also we have a very popular program, that is certificate program in yoga. क्योंकि आज के दिन में आपको योगा इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आपको और बताने की जरूरत नहीं है. ये जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर देश की नहीं विदेश में भी हर व्यक्ति को आना चाहिए. तो इसलिए ये प्रोग्राम हमने मिनिमम लेवल पे रखा है, दैट इज 12 पास कैंडिडेट. एनी पर्सन्स whether science or not science, they can join this program. और इस प्रोग्राम के अंदर 2 थ्योरी कोर्स और 1 प्रैक्टिकल कोर्स है. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आसन आ गया मतलब मुझे योगा आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है. आपका सोच, आपका एक्शंस और आपका जो बिहेवियर है वो आपका यौगिक तरीके से होना चाहिए. इसलिए हम बहुत सारा इंपॉर्टेंस थ्योरी के ऊपर देते हैं. तो ये प्रोग्राम में आपका 12 डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी एक मैंडेटरी प्रोविजन है. विदाउट हैविंग दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यू कैन नॉट कंप्लीट दिस कोर्स. सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम और कोर्स मटेरियल इतना अच्छा है कि अगर आप इस प्रोग्राम को कर ले तो आपको इजीली सर्टिफिकेट लेवल लाइक योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का लेवल 2 भी आप पास कर सकते हैं. Besides this, we also have a 4 more skill-based program. This program we developed in collaboration with Ministry of Health and Family Welfare. जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम ए सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट. एनी 12 पास कैंडिडेट कैन डू दिस प्रोग्राम. यहाँ पे हमारा अराउंड ये सारा 4 प्रोग्राम में अराउंड 3 से 3.5 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंडेटरी है, क्योंकि आप को हॉस्पिटल की हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा इसका कोई अदर ऑल्टरनेटिव नहीं है. तो इसमें भी एक हमारा थ्योरी कोर्स, 2 थ्योरी कोर्स है और 1 प्रैक्टिकल कोर्स है. नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट इन जीरियाट्रिक केयर असिस्टेंट. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो जीरियाट्रिक एज ऑफ पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इस प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी है 12 पास विद साइंस. इसमें भी हमारा अराउंड 3 महीने प्रोग्राम, 3 महीने हॉस्पिटल सेटअप में आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूरी है, और इसमें भी हमारा 2 थ्योरी कोर्स और 1 प्रैक्टिकल कोर्स मैंडेटरी है. हमारा नेक्स्ट कोर्स है सर्टिफिकेट इन फ्लेबोटोमी असिस्टेंट. ये प्रोग्राम इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल जैसे जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, हम जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसे हम सुन रहे हैं, तो उसके लिए हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज होने से हम बहुत सारा टेस्ट कराते हैं. तो आप नेक्स्ट टाइम में जब भी कोई आदमी आपका ब्लड टेस्ट करने के लिए आपको नीडल प्रिक करता है आपके शरीर में, आपको पूछना चाहिए whether that person is qualified phlebotomist or not. तो ये प्रोग्राम में हम 6 महीने की प्रोग्राम है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसमें 3 महीने के हम देते हैं. तो इसमें हम प्रॉपरली सिखाते हैं कि आपके शरीर से कैसे ब्लड निकालने हैं. नॉट ओनली यंग इंडिविजुअल, जैसे कि बच्चे का, बुजुर्ग का, किसी फैट आदमी का, किसी बर्न पेशेंट का, इमरजेंसी कंडीशंस में, डिफरेंट कंडीशंस में आपका ब्लड विड्रॉ करने, फिर सैंपल मैनेज करना, सैंपल ट्रांसपोर्ट करना, रिपोर्ट आपको कैसे देना, वो सब हम पूरे प्रॉपरली सीख हो गया है. तो इसलिए इसमें भी हम अराउंड 3 महीने के आसपास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, और 2 थ्योरी कोर्स और 1 प्रैक्टिकल कोर्स है इसमें. एंड there's a call from Reva. Yes.
हेलो। हाँ जी, बोलिए। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून जी मैं पीजी स्टूडेंट था और रजिस्ट्रेशन है। तो आप जो है ना, अगर आप एडमिशन ले चुके हैं और पिछला जो आपका प्रीवियस ग्रेड कार्ड स्टेटस है उसका प्रिंट आउट लेके आप रजिस्ट्रार SRD को आप जो है भेज सकते हैं, तो उसको आगे भी प्रोसेस किया जा सकता है। तो मैडम फॉर्म कोई सा भी यूज कर सकते हैं? नहीं, आप ईमेल कर दीजिए, तभी आपको फॉर्म बताया जाएगा। अच्छा, तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का कांटेक्ट कैसे मिलेगा? थैंक यू। सो डॉक्टर बिप्लब, वुड यू वांट टू ऐड एनीथिंग मोर? हाँ, ये जो 4 स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, ये इसका हमारा देश में बहुत जरूरी है। और हमारा इस प्रोग्राम करने की तुरंत बाद हम एश्योर तो नहीं करते, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को इमीडिएटली जॉब प्लेसमेंट हो जाता है। तो अगर किसी को ऐसा कोई प्रोग्राम करना है जो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, जिसमें 6 मंथ्स प्रोग्राम के अंदर आपको 3 महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके पास होते ही अगर आपको नौकरी चाहिए, तो ये 4 जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। थैंक यू डॉक्टर बिप्लब। आई थिंक बहुत सारे प्रश्नों के हमने जवाब दिए। बहुत सारे प्रश्न ऐसे रह गए होंगे जिसके जवाब हम नहीं दे पाए होंगे क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पाए हमसे। सो डू नॉट वरी, टाइम इज नाउ ऑलमोस्ट ओवर, बट यू कैन ईमेल अस at sohs@ignou.ac.in। नहीं तो आप डायरेक्टर की ईमेल में भी कर सकते हैं, डायरेक्टर sohs@ignou.ac.in। और आज का प्रोग्राम अगर आप फिर से देखना चाहेंगे तो YouTube पे अवेलेबल है। आप YouTube के लिंक में भी खोल के YouTube इग्नो ऑनलाइन करके अगर आप करेंगे तो आपका प्रोग्राम ये वाला हो जाएगा। स्टूडियो से अगर वो पूछना था वो इन्फॉर्मेशन मिल गई, और बाकी बहुत सारे लोगों ने और जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको भी क्लैरिटी हो गई कि हमारे कौन से प्रोग्राम्स हैं, उसमें क्या क्या है, कितना प्रैक्टिकल है और उससे क्या फायदा हो सकता है, और ज्वाइन करके आपको आप किस तरह से अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। So I'll take this opportunity to thank my panelists, Dr. Rita, Dr. D.P. Singh and Dr. Biplab. Thank you so much for being there and for answering all the queries that our students and prospective students and also admitted students had. Thank you very much. Namaskar.